Hello friends, welcome back to another amazing video cause I am here with very amazing update regarding the Arcade Facilitator program, and that is your milestone progress report is here. Yes, if you properly enrolled in the Arcade Facilitator program, then your progress report should be visible in your email box. Check your email right now, go to the primary inbox, or if it's not visible in the primary inbox, then check your spam box also. Maybe the report lie in the spam box. So quickly jumping to the report itself, the progress syllabus button will redirect you to the progress report of progress report नहीं लेकिन syllabus page of this whole arcade program. Here you will be able to see all the arcade games that are currently available or are about to be visible in the future program, and you will be able to see all the skill batches list here. Now coming back to the progress report contains some important announcement and reminders. Also, it will make you clear about your arcade and bonus points that you have earned so far. But there is a clear note here that your progress might be 24-hour old. It means the games and the challenges that you completed within the last 24 hours may not be visible in this report. So don't panic about this. हो सकता है कि वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हो क्योंकि ये 24-hour old progress report है आपकी. Okay, and in the same manner you will be seeing this the progress report in the few more days. ऐसे ही डेली आपको अपडेट किया जाएगा. Every few days you will be seeing this progress report. Okay. Now, coming to the important announcement, the first one is regarding the program deadline that has been extended till 27th September. I already mentioned in the previous videos that the deadline is already extended till the 27th September. And I also mentioned all these updates or the important announcement on my WhatsApp group. तो अगर आपने अभी तक WhatsApp group ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि सारी announcement पहले ही वहां पर डिस्कस हो चुकी थी. Now, the second announcement is regarding the arcade and trivia, which are now available. And अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है आर्केड प्रोग्राम्स और एनरोलमेंट प्रोग्राम में, तो आप ये लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं. आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको इसमें एनरोल करना है. ओके, नाउ द लास्ट important information is the 15 days, 15 lap per day limit. It's very important to understand this point because there are 15 lap attempt limits, not completion limit. आपको पर डे 15 लैप्स अटेम्प्ट करने का चांस मिलेगा, नॉट कंप्लीट करने का. इट मींस per day you would be eligible to attempt only 15 laps. It will be reset after the day get over. हर एक दिन ये reset हो जाया करेगी. आप एक दिन में 15 लैप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं. कंप्लीट भी नहीं, अटेम्प्ट कर सकते हैं. कंप्लीशन डजेंट मैटर, अटेम्प्ट मैटर, यानी कि आपने एक लैप को कितनी बार स्टार्ट किया है. तो टोटल आप 15 टाइम्स लैप्स को स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट which contains the number of games completion, the trivia batch completion, the skill batches completion, and the milestone earned so far. Okay, so this is a demo report. So it's not my actual ID. So I am giving you idea if you completed the games, which are the games. So coming to the arcade official websites, let me show you what are the games and what are the trivia. I just want to show you. So games are these: the August Boot Camp games, the level one game, the level one, level two, level three. These are the games, and trivias are the these week one, week two, week three, week four. These are the trivias. So make sure you are good with these terminologies. And the milestone I already mentioned several times in my WhatsApp group as well in previous videos. कि milestone क्या है, ये milestone की progress किस according चल रही है, and what benefit you will get on completing the milestone. Before moving toward the milestone, I simply want to inform you that अगर आपने referral code, if you use the referral code to fill the arcade enrollment form, then only you will be getting the benefit of these milestone. Otherwise, you won't get the benefit of the milestone. अगर आपने जो enrollment form निकला था जिसमें आपको facilitator का referral code use करना था, वो use किया था, तभी आपको milestone के benefits देखने को मिलेंगे, otherwise नहीं मिलेंगे. So let me explain you the milestone. As you can see, first milestone is complete 2 arcade games, 2 trivia games, and 8 skill batches. On completing the first milestone, you will be getting 2 bonus points. आपको first milestone complete करने पे 2 bonus point मिलेगा. Similarly, सेकेंड माइलस्टोन कंप्लीट करने पे 9 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. आर्केड पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं जो आपने लेवल्स और गेम्स कंप्लीट किए हैं. उसके अलावा भी एक फैसिलिटेटर की तरफ से, जिसका आपने फैसिलिटेटर कोड यूज किया था, उनकी तरफ से आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे. सो इन द सिमिलर फैशन, all the milestone that you will complete, you will get the bonus
पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दैट माइलस्टोन। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सारे माइलस्टोन कंप्लीट कर लिए देन आपको 25 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। जिस भी माइलस्टोन में आप सीजन के एंड होने पे लाइक कर रहे होंगे, उस माइलस्टोन के बोनस पॉइंट्स आपको आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर कर ली हैं, जो भी एक एक पॉइंट कवर करना था। और अगर आपको अभी तक की रिपोर्ट नहीं आई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, देन आप मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। Make sure you hit the like button, hit the subscribe button so that you will get the instant notification of every video that I will be uploading in the future. That's it. Thank you very much. Goodbye.